more minutes क्योंकि लिंक अभी आया है. So we'll wait for just 2 more minutes so that others can join. Then we can start the class. Okay. Meanwhile, if you have any queries, questions, anything, you can ask me in the chat box. अच्छा, 2-2. ये आपको सर से ही पूछना पड़ेगा. आई डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द पीपीटी दैट पीडीएफ्स. ओके. तो आप सर से ही पूछ लीजिएगा. यस, थैंक यू. Yes, good evening everyone and welcome to today's session जिसमें हम लोग कर रहे हैं horticulture. So मैं screen share करूंगी so that we can start and meanwhile others while joining, अगर आपको कुछ questions ऐसे कुछ है तो you can ask me. Yes, ये हो गया हमारा. Minimize sharing भी हो गया. Hope everyone can see it, can see the PPT and also my voice is audible to you all. सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? हेलो. यस, ओके, थैंक यू. यस. अच्छा, एक चीज बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, एक छोटी सी चीज मुझे आप सब लोगों से पूछनी थी. जो अभी पेस हमारा चल रहा है, द पेस एट विच आई एम टीचिंग, वो सही है या फिर आपको लग रहा है थोड़ा स्लो है? क्योंकि आज जैसे मैं कंटेंट बना रही थी, मुझे लगा कि मैं थोड़ा स्लो तो नहीं जा रही हूँ, कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो रहा है. इज दिस एक्सप्लेनेशन ओके या फिर मैं थोड़ा सा अपना पेस बढ़ाऊं? ठीक है ये पेस, कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे सबसे आंसर चाहिए, बस एक या दो आंसर से मुझे, मैं वो सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकती. इज इट ओके टू एवरीवन? जो पेस अभी चल रहा है, द पेस एट विच आई एम टीचिंग, इज इट ओके? और हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं? It's okay, ma'am. ओके, थैंक यू. कुछ तो मुझे आंसर मिला. अच्छा, थोड़ा सा फास्ट जा सकते, थोड़ा सा जाएंगे फास्ट क्योंकि ऑलरेडी आपने ये पूरा पढ़ा हुआ है. सो आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा नहीं लूंगी, थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगी सो दैट आप मुझे बता सकते हैं कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि आपको पेस ज्यादा लग रहा है. ठीक है. यस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो अभी तक हमने देखा है डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सब हमने देखा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ, अभी प्लांट प्रोपगेशन ही कर रहे हैं. आज इसको हम लोग वाइंड अप कर देते हैं सो दैट फ्रेशली मंडे के दिन वी हैव ऑल्सो सीन द सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एंड प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. अभी मंडे के दिन जब हम लोग रीस्टार्ट करेंगे देन विल लुक इनटू लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड्स, ये सब बाकी जो है ना वो देख लेंगे. ठीक है. नाउ सो आज हम लोग प्रोपगेशन वाला कंप्लीट करेंगे. ये ऑलरेडी हमने देख लिया मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन. देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन, सेक्सुअल मेथड एंड एसेक्सुअल मेथड, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन. दोनों का भी हमने जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो हमने देख लिया है. ठीक है. Now, before getting into the types of other propagation methods, कुछ terms है that you need to know. One of that is the polyembryony. Now, what is polyembryony? Poly, multiple embryos. So, multiple embryos are developed in a single seed. So, here production of two or more embryos from a single seed. Like in humans, we have identical twins. So, ये polyembryonic mango है, ये monoembryonic mango है. Now, what is the difference? Whenever
पॉली एम्ब्रियोनी से क्या होता है, द अमाउंट, द साइज ऑफ द फ्रूट, क्योंकि दो एम्ब्रियोस को नरिश करना होता है एंड अकॉर्डिंगली द साइज ऑफ द फ्रूट ग्रोस बिगर, सो पॉली एम्ब्रियोनी का बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पे. सो इट इज कॉज ईदर ड्यू टू फर्टिलाइजेशन ऑफ वन और मोर देन वन एम्ब्रियोनिक सैक और ड्यू टू द ओरिजिनेशन ऑफ एम्ब्रियोस आउटसाइड द एम्ब्रियोनिक सैक, एक्स्ट्रा वो हो जाते हैं. लाइक जामुन में आपको ये मिलता है पॉली एम्ब्रियोनी, मैंगो में मिलता है सिट्रस. ओके, उसमें सीड आप ओपन करके देख लीजिए, यू कैन फाइंड 2 to 3 एम्ब्रियोस. ओके, नेक्स्ट आता है टर्म अपोमिक्सिस. अपोमिक्सिस ग्रीक में अवे फ्रॉम और मिक्सिंग, सो हियर it is the asexual formation of the seed from the maternal tissues. so जो pollen प्लस ओव्यूल ये फ्यूज होके सीड बनता है. नाउ हियर विदाउट दैट द ओव्यूल इटसेल्फ और सम मेटर्नल टिश्यूज ऑफ द ओव्यूल इटसेल्फ विल बी डेवलपिंग इनटू avoiding the process of meiosis and fertilization, it will develop into seed. This is called as apomixis. ये आपको क्रैब एपल में मिलेगा. ये क्रैब एपल है, चाइनीज क्रैब एपल, सिक्किम क्रैब एपल, सार्जेंट क्रैब एपल. आपके यहाँ तो ये दिखता भी होगा नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में. ठीक है, थर्ड हमारा टर्म है पार्थिनोकार्पी. नो पार्थिनोकार्पी, यू ऑल नो दैट इट्स अ कंडीशन इन व्हिच फ्रूट्स आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे भी अपोमिक्सिस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बट हियर सीड्स आर फॉर्म्ड. ओके, बट पार्थिनोकार्पी नो फर्टिलाइजेशन, नो सीड्स. ओके, so here fertilization is absent in both the cases, but only apomixis में seeds बनेंगे, whereas parthenocarpic fruits are seedless. as you can see, these are seedless bananas, ये seeded है, and this is seeded tomato and this is a seedless tomato. नाउ ये जो अभी हमने देखा वो सेक्सुअल मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन में ही कुछ टर्म्स है. नाउ विल लुक इनटू द असेक्सुअल मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स. देयर आर वेरियस मेथड्स दैट यू कैन सी ओवर हियर. लेयरिंग, कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, planting of modified organs, micro propagation, all these fall under various asexual propagation methods. एक एक करके देखते. सबसे पहले देखते कटिंग्स. The name itself suggests a cutting is usually a division of the stem or root or leaf of a plant which is extracted from a plant and planted in the soil. कोई भी एक पार्ट हो ले जाके हम सॉइल में डाल देंगे तो वो नया प्लांट आ जाएगा. ठीक है, एंड जनरली ट्रू टू टू टाइप ऑफ दर मदर प्लांट होगा, बिकॉज उसी का पार्ट लेके कर रहे हैं, होमोजाइगस इन नेचर. इसमें 3 तरह के कटिंग्स हो सकते हैं. एक तो रूट कटिंग्स, लीफ कटिंग्स एंड स्टेम कटिंग्स. रूट कटिंग्स में क्या है, एज यू कैन सी हियर इन दिस फोटोग्राफ, इज पार्ट ऑफ द रूट is used for plant propagation. So a portion of the root is cut from the parent plant, placed in the growing medium and then left to grow on its own. रास्ता में जा क्लास लेते हैं. ये कौन बात कर रहा है, प्लीज आप सब लोग म्यूट में रखिए अपने आप को. इट विल बी रियली डिस्टर्बिंग फॉर अदर्स. ओके, ठीक है. And then they'll grow on its own, like your mulberry, low cut, even curry leaf that also has, from roots new what you'll say buds, they grow. Next आता है leaf cuttings. That as you can see generally ये what you can say ornamental plants में ये बहुत देखने को मिलता है. So leaf or part of the leaf is cut carefully from the plant, planted in compost, then watered thoroughly, it will grow into a new plant. As you can see here, ये leaf है, they have planted it, उसमें छोटे छोटे buds आ गए, as you can see here, and then slowly ये dry up होता है, because whatever the food material that is there in that would be utilized by this growing plant, and then it will grow into a new plant, as you can see here. ठीक है, ये हो गया लीफ कटिंग्स. नेक्स्ट आता है स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग्स में स्टेम लेके करते हैं, बट हियर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेम कटिंग. सॉफ्टवुड स्टेम कटिंग्स, सेमी हार्डवुड कटिंग्स एंड हार्डवुड कटिंग्स. नाउ मैंने ये एक क्या बोलते हैं डिफरेंसेस वाले टाइप में टेबल में डाल दिया. सॉफ्टवुड कटिंग्स, ये तीनों एक तरफ, कटिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कटिंग्स एंड एग्जांपल्स. Softwood stem cutting, soft tender shoots, still green, they are used. ये बहुत टेंडर, मतलब as you can see here, जो बिल्कुल टिप वाले होते हैं ना, वो लेके करते हैं. एंड कई बार ऐसा होता है कि जो वाइन्स होते हैं, वाइन प्लांट्स में, जैसे पॉइंटेड गॉड, बेस्ट एग्जांपल आई कुड गिव हियर इज पॉइंटेड गॉड, उसमें वो टिप
वो जो बहुत ही टेंडर वाला जो टिप होता है ना, वो लेके सॉइल में अगर हम लोग सही से प्लेस करके मैन्यूर एंड वाटर करेंगे तो डेफिनेटली इट विल ग्रो इनटू ए ब्रांड न्यू प्लांट. So इसमें 8 to 10 centimeters with growing tip and few leaves at the tip, it can be taken. Best example pointed got herbs like Gymnema sylvester Gurmar and Bacopa muneri brahmi. ठीक है, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स है. सेमी हार्डवुड कटिंग्स, ये सेमी हार्डवुड कटिंग्स है. टेंडर शूट्स and branches of the current year growth and they should have brown blotches on the green stem are used. ये बिल्कुल green stem as you can see है, जगह जगह brown blotches है. इतना size का it would be sufficient. Approximately 20 centimeters with a pair of leaves present at the tip as you can see here. Here in this case that can be taken and that can be sown. तो ये फिर brand new plant हो जाएगा. Piper, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया गदूची, आदा टोडा वासिका अडूसा, एक्लिप्टा एल्बा ब्रिंगराज, ऑल दीज आर हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स. थर्ड आता है हमारा हार्डवुड कटिंग्स. ब्रांचेस ऑफ द करंट ईयर्स ग्रोथ आर यूज्ड. एटलीस्ट पेंसिल थिकनेस होने चाहिए इस तरह से, एज यू कैन सी ये पेंसिल थिकनेस measuring 25 to 30 centimeters and it should have at least 4 to 5 nodes having uniformal internodal growth which happens only when it has grown properly. So Punica granatum, hibiscus, Lawsonia inermis, ये सारे they can be propagated through hardwood cuttings. इस तरह से pencil thickness, and if you sow that into the soil then it will grow into a new plant. नेक्स्ट टाइप आता है, एक तो कटिंग्स हो गया, सेकंड आता है ग्राफ्टिंग. नाउ इन ग्राफ्टिंग वी ब्रिंग टुगेदर टू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज and fusing them together to grow into a single plant. Now यहाँ पे दो terms आपको सुनने को मिलेंगे. एक तो है stalk which is also called as in many cases rootstock, okay, and the other is scion. The plant part that receives another part that is, if अब इस केस में देखिए this is the rootstock, okay, because this only provides nourishment. ये soil में रहता है and this provides nourishment. इसका कोई भी characteristic features as such would not be introduced into the growing plant. And this is the scion, and scion के जो positive features that we want in the new plant, because that's the reason we are getting that from the desired plant, the cutting, and then we are inserting this into this. So while the plant part that serves as a graft is called as a scion. Scion always carries the positive qualities of the mother plant, while the stalk serves as a root system for the seedling. ठीक है? Now these are the various types of grafting that you can see. सबसे पहले आता है approach grafting. ये है approach grafting where the scion plant and the rootstock are still attached to their respective parents. Okay, rootstock तो वही होगा. They will be brought close together. एक हल्का सा कट देके on both the cases they will be fused together, tied, and once ये बिल्कुल live हो जाता है and you know it starts growing, then they will cut off this from here and these branches they will cut off and let this union grow as a new plant. So okay, this is approach grafting, that is it involves between the selected scion and stalk while the branches are still growing on the parent plants. roses, peaches इन सब में ये बहुत common है. इनार्च grafting ये भी एक तरह का approach grafting ही है, but here the scion and stalk जो especially scion वो बिल्कुल parent plant से अलग हो गया है. There they are getting it done. And here 1 year old twigs of the scion tree about 60 centimeters in length and nearly the same thickness of that stalk is chosen for grafting. This is inarch grafting. Most commonly commercially it is done in mango. Mango में ये बहुत करते हैं. एक और में भी है guava. Inarch grafting उसमें बहुत highly successful है. As you can see here, this is how they remove, they attach that tie. ये एक root stock नीचे एक attached है. Okay, ऊपर वाला पूरा कट है root stock का, and scion का यहाँ से कट है and यहाँ से थोड़े बहुत एक आधे leaves होंगे. So they'll cut and that will grow into a new plant. थर्ड आता है वेनिर ग्राफ्टिंग. सो सिंपल प्रोसेस, सॉरी फॉर एग्जांपल, ये तो एग्जांपल्स बता दिया मैंने. Simple process for mass scale commercial propagation can be adopted with success. For conducting this graft operation,
एक बार फोटो से दिखा देती हूँ। वेनिर ग्राफ्टिंग, एक साइड से नो, फ्रॉम वन साइड इट इज कट इनटू डीप, okay, onto the rootstock. Then you'll get the scion, cut it into a wedge shape, like this. Okay, chisel it. In simpler terms, you can chisel it like this, and then insert that into the veneer, and then tie it as you have done this. This is also one of the easiest commercially grown grafting. As you can see, 30 to 40 long cut is made. Okay, at the height of 20 centimeters from the bottom, एटलीस्ट नीचे से 20 सेंटीमीटर्स होना चाहिए. हियर दे विल गिव दैट कट, डीप कट, एंड अटैच दैट. मैपल, मैंगो, फिर पाइन, इन सब में ये बहुत कॉमन है. नेक्स्ट इज वेज ग्राफ्टिंग इन द फॉर्म ऑफ वेज. दिस इज डन, हेंस वेज ग्राफ्टिंग. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द स्टॉक, root stock. A single slit is given into this, okay, vertical slit, and then this is chiseled, and then that is inserted into this and tied. This is called as wedge grafting. Again, ये भी अच्छा ही है, and this is generally done in avocado, passion fruit, and in few citrus species. Next आता है एपिकोटाइल और स्टोन ग्राफ्टिंग. ये important है because it is one of the simplest, cheapest, and quickest methods of mango propagation with success rate of close to 75 to 80%. नॉर्मली अप्रोच ग्राफ्टिंग, इनार्च ग्राफ्टिंग, वेनियर, वेज कुछ भी करना है तो वो एक पर्टिकुलर एज होना चाहिए, at least 1+ year or even more than that in some cases. But here epicotyle grafting मतलब वो टेंडर कॉपरी लीव्स होते हैं ना मैंगो में, उसी टाइम पे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, फॉर दिस पर्पज स्टोन शुड बी सोन इन जून जुलाई, okay, as it is the most suitable month. After germination, seedlings with tender stems having the coppery leaves are lifted with stones still attached, and then onto that grafting is done. एक फोटो दिखाते हैं, ये एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है. यहाँ पे वॉलनट का भी अटैच्ड है, ये जस्ट अभी जर्मिनेट हुआ है, और टू दैट दे हैव ग्राफ्टेड. मतलब बहुत टेंडर. इससे क्या होता है, एक तो बिल्कुल टेंडर है, अभी अभी ग्रो हो रहा है, सो जो एक्लेमेटाइजेशन होता है दैट विल नॉट टेक मच टाइम. एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे तो यू नीड नॉट वेट फॉर दैट मेच्योरिटी ऑफ दैट स्टेम, सो दैट आप दूसरे तरह के ग्राफ्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी, जल्दी होने वाला, टाइमली, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग. नाउ हियर दिस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग इज डन व्हेन द रूट स्टॉक इज ओवरग्रोन, wherein seedlings of 8 to 10 months old are selected, that is newly emerged flush. The scion wood is to be defoliated 10 days prior to the grafting, and it should always be दोनों का same thickness होना चाहिए, both the scion and the rootstock. And it is very much similar to stone grafting because ये बहुत टेंडर होते हैं जो stems इन्होंने select किया, because ये बहुत ही मतलब कितना 8 to 10 months old ही है. ओके, सो इसीलिए इसको सॉफ्ट वुड, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, जो 1 year ग्रोथ से पहले होता है ना सॉफ्ट वुड कटिंग, उसी तरह से. ओके, दिस मेथड इज ऑफ ग्राफ्टिंग इज सिमिलर टू स्टोन ग्राफ्टिंग. जुलाई एंड ऑगस्ट आर द बेस्ट मंथ्स फॉर सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग. मैंगो, सपोटा, जैक फ्रूट, कैश्यू, टैमरिंड, सब में ये होता है, ये सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग. एज यू कैन सी हियर इज slant and one deep cut, slant and one cut. This would be insert into one another and tied, as you can see here. This is how it is done. Okay, ये हो गया. नेक्स्ट आता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग. ओके, नाउ इट्स अ ग्राफ्टिंग विच अलाउज द यूनियन ऑफ ए रूट स्टॉक लिम्ब दैट इज मच लार्जर इन साइज देन द सायोन पीस. जनरली ये डॉर्मेंट कंडीशन में जब रहता है उसी टाइम पे, दिस इज एन स्पेशली एप्पल में करते हैं ये क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, कंडक्टेड इन लेट विंटर व्हेन बोथ द रूट स्टॉक एंड द सायोन आर इन डॉर्मेंट कंडीशन. ये है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग. एज यू कैन सी हियर, कट्स मतलब ये रूट स्टॉक मच लार्जर देन द सायन. ओके, इन दैट केस एक से काम नहीं चलेगा, सो दे हैव टेकन 2 सायंस एंड दे हैव इंसर्टेड देम एंड टाइड देम थॉरली, एंड दोनों ही डॉर्मेंट है, ये भी डॉर्मेंट है, ये भी डॉर्मेंट है, लेट विंटर. ओके, बिकॉज वंस नो स्लोली बाय द टाइम दे गेट एक्लेमेटाइज्ड, कंड्यूसिव कंडीशंस आ जाएंगे, मतलब हार्श विंटर चला जाएगा, सो दे विल बी एबल टू ग्रो वेल. ठीक है, नेक्स्ट आता है टंग एंड विप ग्राफ्टिंग. मतलब फोटोज दिखा दे, ये दिस तरह एक जिगजैग की तरह. ओके, एंड इन दिस ये बहुत लंबे लंबे होते हैं. समटाइम्स इट we feel as if it's a tongue sticking out. Okay, that's the reason it's called as a tongue, or sometimes it looks like a whip. So this would be inserted to one another and then tied.
Okay, this is called as whip and tongue grafting. Now this works best for scions and stalks of same size, but it can be modified to accommodate stalk that is slightly larger than the scion. Tongue graft is a modification of the relatively simple but not as strong whip graft. In whip graft, the scion and stalk are simply cut at an angle and taped together, जो हमने देखा है. We can make this more stable and much stronger by cutting a slit in each piece and wedging the tongues. जो हमने ये दो tongues जो cut किए हैं, by wedging that into the below one, you can make it more strong, जिनको tongue grafting बोलते हैं. So your example, apple में ये बहुत use किया जाता है. बहुत use मतलब it has been tried, tested and tried. नेक्स्ट ब्रिज ग्रैपिंग. कई बार ऐसा ग्राफ्टिंग, सो इसमें कई बार ऐसा होता है ना कि नो देर इज सम रोडेंट ने पूरा पेड़ को काट दिया है, दैट इज आउटसाइड केम्बियम, जो बिल्कुल फूड मटेरियल्स को सप्लाई करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो इससे क्या होता है, दिस रूट स्टॉक दिस स्टार्ट्स डाइंग, बिकॉज इसी आउटर में ही हमारे फ्लोइंग वेजल सारे रहते हैं, राइट. नाउ वी डोंट वांट दैट प्लांट टू डाई. इन दैट केस वी कैन गो फॉर ब्रिज ग्राफ्टिंग. सो हियर जो फ्लोएम वाला जो बिल्कुल निकल गया है, फॉर दैट they'll take scions, and as you can see in the picture, they'll insert these scions like this, so that this will act as a bridge. ये एक्चुअली एक प्रोपगेशन मेथड नहीं है, बट दिस इज टू सेव द इंजर्ड ट्रीज फ्रॉम द रोडेंट अटैक और सम इंजरी हो गया किसी भी तरह से, एंड द जो फूड मटेरियल फ्लो है दैट हैज कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड. इन दैट केस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ones. As you can see here, trunk of the tree girdled by mice in this case, wound cleansed and bark along the margins trimmed back to healthy growing tissue. जहां तक हेल्दी ग्रोइंग, ये पूरा डैमेज है तो बिल्कुल हेल्दी ग्रोइंग टिश्यू तक उसको पूरा स्क्रेप ऑफ करके, नाउ साइंस इन प्लेस शोइंग देयर इंसर्शंस अंडर द बार्क. दिस वर्क कंप्लीटेड एक्सेप्ट फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग. एक प्रोटेक्टिव कोटिंग भी हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, सो दैट इंजुरी में कोई बैक्टीरियल या कुछ फंगल इन्फेक्शन ना आए. सो दिस विल एक्ट एज अ ब्रिज एंड स्लोली द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स विल बी रिस्टोर्ड, देयर बाय सेविंग दैट ट्री. ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रिज. जनरली एप्पल्स, पेयर्स, वॉलनट, चेरीज जो ऑर्चर्ड्स है ना, उसमें ये कंडक्ट करते हैं सो एज टू सेव द ट्रीज. ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा ग्राफ्टिंग मेथड्स. नेक्स्ट आता है लेयरिंग. नाउ लेयरिंग भी a kind of vegetative propagation here, where a vegetative branch is made to root while it is still attached to the mother plant, which will later be excised and planted as a new seedling. Okay, so इसमें ये सारे हैं एयर लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, माउंड लेयरिंग और स्टूलिंग, कंटिन्यूस और ट्रेंच लेयरिंग एंड सर्पेंटाइन लेयरिंग. एयर लेयरिंग, एज यू कैन सी दिस इज एयर लेयरिंग. ये गोवा में बहुत ज्यादा होता है. एज यू कैन सी ये ट्री है, उसका जो भी ब्रांच है, एक 1 ईयर to 1.5 ईयर ग्रोथ वाला ब्रांच लेंगे, एंड दैट वुड बी स्क्रेप्ड ऑफ. उसका पूरा जो ब्रांच का जो ऊपर का जो है ना बार्क, वो सब निकाल देते हैं, एंड लाइक दिस दे विल पुट द मैन्यूर. ओके, उसमें सारे कभी कभी हार्मोन्स भी मिलाते हैं, रूटिंग हार्मोन्स एक्सेट्रा. सो दिस विल बी स्टक एंड देन इट विल बी टाइड प्रॉपरली सो दैट उस पर कोई मॉइस्चर जमे नहीं, एंड टू अवॉइड एनी fungal infection. So after that, slowly this will be left for a few days. Now slowly, as you can see here, इसमें roots are, as you can see here. Now after this starts rooting, they will cut this off from the mother plant, and now see, as you can see here, they have been separated from the mother plant, they have been planted, and now they are ready for sale. Okay, this is called as air layering because the layering part is done in the open air itself. Gooseberry, tamarind, ficus species, lychee, guava, mango, Persian lime, crotons, etc. This air layering can be done. Commercially, ये लीची में बहुत ज़्यादा famous है. Simple layering. So here, simple selected shoots are bent and pegged down at a distance of 15 to 20 centimeters from the tip. As you can see here, ये है. तो यहाँ से थोड़े से दूरी में this would be bent into the soil. इस तरह से peg करेंगे so that it won't come up. Okay, after a few days, here it will root. So they'll cut off from this mother plant. Now it will grow into a new plant. This is simple layering. माउंड और स्टूल लेयरिंग इसमें क्या है, नियर जहां पे एज यू कैन सी यहाँ से ब्रांचेस आ रहे, सो हियर इटसेल्फ दे विल क्रिएट दे विल पुट द सॉइल, माउंड ऑफ सॉइल. ओके, सो हियर इट स्टार्ट्स ब्रांचिंग. So here after that they'll cut it off here, they'll cut it off here by removing this mound and let them grow as new plants.
ओके, ऐसे भी कर सकते हैं. नाउ दिस द टर्म स्टूलिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लिंच इन 1942 एंड ये एप्पल, पेयर, क्विंस, करेंट्स, गूसबेरी एंड अदर फ्रूट क्रॉप्स में ये होता है. एंड बिफोर दैट द रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड सो एज टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स. ओके, यहाँ पे भी हर जगह पे रिंग ऑफ द बार्क इज रिमूव्ड ओनली देन इट इज इंसर्टेड इनटू सॉइल. रिमेंबर दैट. कंटिन्यूअस और ट्रेंच लेयरिंग, ये कंटिन्यूअस और ट्रेंच लेयरिंग है, बिल्कुल निकाल के ये डाल देते हैं आफ्टर रिमूविंग द bark, and slowly after few days it develops into, roots are developed and the shoot starts growing, then they'll cut all these and now these will be new plants. Wahi serpentine layering, it is also kind of trench layering, but it is done as you can see here like a serpentine, alternately one branch up, one down, one up, one down and peg down. Okay, and ये इस तरह से जो roots जब बनेंगे then they'll cut it off from here, thereby they'll grow into a new plant. So ये continuous trench, ये vigorous roots of apple में बहुत use होता है like M16 and M25 and walnut में. वही serpentine layering, heart leaf philodendron pothos, wisteria, clematis, grapes में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है. सो ये हो गया हमारा लेयरिंग. नेक्स्ट आता है प्रोपगेशन थ्रू मॉडिफाइड ऑर्गन्स. Now, several species of plants ensure their propagation with the help of modified organs that serve as a propagation material. Best example, tubers, as you can see here. Tubers is nothing but ये stolons, मतलब part of stem only that is grown into, that has root, no, that has stored the food and bulged, right? So since it is stem only, stem में क्या होते हैं, nodes and internodes होते हैं. Nodes के पास से ही buds आते हैं. These nodes on this potato are nothing but the eyes. ओके, एंड दीज आर द स्कार्स ऑफ द लीफ. सो इसी आइस में से यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, दैट बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट. एज यू कैन सी हियर, these are the eyes, from that buds are germinating. Now here if you cut like this and put it in soil, it will grow into new plant. That's it. This is the propagation through modified organs called tubers, like gloriosa superba, ipomia, dioscorea, asparagus, adenia, सब में ये examples है. ठीक है. नेक्स्ट आता है थ्रू suckers. Now, sucker is nothing but a small plantlet that appears around a mother plant from its base. यहाँ banana best example है. Now, banana के नीचे क्या है? It is a rhizome actually. ये जो ऊपर जो देख रहे हो सब तो pseudo stem है, ठीक है. So ये rhizome stem है, so it has nodes. Okay, and buds develop होंगे. वही buds later develop into this new daughter plants called as suckers. Now, once you separate them, then they assume as an independent plant. Otherwise, generally suckers आते हैं इनको निकाल देते because they utilize all the nutrition that is meant for this mother plant. Only when this is being cut off, then they will allow these suckers to grow. Okay. Next आता है rhizome, swollen and compressed underground stem with short scaly leaves, and ये सारे ये हल्के से जो है ना ये scaly leaves है, and this also here you can see scaly leaves. Now उसी के ऊपर vegetative buds होते हैं that will grow into a new plant. जहाँ पे भी buds है they will grow. Lotus, banana, turmeric, ginger ये सब में rhizome से होते हैं. Next important type of asexual methods of reproduction is budding. Okay, now here जहां से हम लोग बड ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द बड स्टिक. रूट स्टॉक तो रूट स्टॉक ही रहेगा. So here selected vegetative bud, this scion or the bud stick, along with a patch of bark is carefully cut from the mother plant, that is from the bud stick, and insert it onto the stalk plant. यहाँ से कट करके इस bud part को उतना ही जो bud है that will be transplanted onto this. Now this is called as budding. Now the graft is tied, keep the bud in place, treated carefully till the union happens. Once union is ensured, portion of the stalk above the bud union जो ऊपर है that would be cut off, and the sprout from the ये जो sprout है from the union bud, scion bud is encouraged to grow further. Here rather than scion bud you can call it as from the bud stick from which the bud is being extracted. Okay, उसमें सबसे पहला टाइप आता है पैच बडिंग. पैच बडिंग मतलब जो बडिंग मेन प्रोसेस है, जो बेसिक प्रोसेस है वही पैच बडिंग है. इन्वॉल्व्स कंप्लीट रिमूवल, एज यू कैन सी इन्होंने पूरा रिमूवल ऑफ दैट पैच
and that they have inserted onto this plant, and now this is growing slowly. So removal of a rectangle shaped patch of bark with the longer sides parallel to the axis of the stem of the rootstock, replaced with a bud patch of the same size from the bud stick. So walnuts, guava, pecans में ये one of the propagation methods है. नेक्स्ट आता है टी बडिंग. हियर इन दिस केस सी, ये टी शेप का एक करके दे विल स्लोली ओपन अप विद द नाइफ, एंड हियर फ्रॉम हियर दे विल take, as you can see here, the bud how they are taking. Okay, this bud they'll cut in this shape along with the bud, and that would be inserted here, as you can see here किस तरह से insert किए, and this would be tied. Okay, incisions are made in the bark of the rootstock as letter T with one horizontal cut and another downward cut that originates from the center of the first cut. From the center of the first cut. A bud piece or shield piece containing a bud is prepared with an upward cut that includes a thin layer of wood, which is then inserted into T cut from the horizontal cut down into this. Pears, apple, peaches, citrus, dogwood, plums, apricots, roses, almonds, pistachio में tea budding can be done. So this is tea budding. लेकिन इसमें सबसे बड़ी problem क्या है? Whenever, if after this budding is done, if rains occur, so there is a high likely chance that the water drops can get into this and इसमें infection होके ये survive करना मुश्किल है. So for that purpose, one of the someone has come up with inverted tea budding. ये inverted tea budding है. तो इसमें क्या है, व्हेन दे टाई हियर थरोली, सो वाटर अंदर सीपेज होने के चांसेस कम है, देयर बाय प्रोटेक्टिंग. सेम उसी तरह से है, सेम यहाँ जैसे कर रहे सेम थिंग, बट रादर देन इस टी दे विल डू दिस उल्टा टी. ओके, इन्वर्टेड टी, and the same, this would be inserted like this only inside and here and tied it like this. So water अंदर जाने के chances बहुत कम रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है चिप बडिंग. द नेम इटसेल्फ, चिप ऑफ वुड इज ऑल्सो रिमूव्ड along with the bud, as you can see here. Okay, the same photograph साइड वन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है. Remove a chip of bark with a small piece of wood attached from a portion between nodes of the young stem of the rootstock. The cut does not penetrate the pith. It should not go very deep into that pith. Okay, only outer one. Replace a chip by another one of same size and shape that contains the bud from the bud stick. So here this is the bud, as you can see here, this is the bud from the bud stick that has been inserted onto this, and as you can see here, it would be tied then. Okay, and it will get done. कुछ फ्रूट ट्रीज में, ग्रेप्स में दिस कैन बी डन. ये है चिप बडिंग. नेक्स्ट आता है आई बडिंग. Now here simple, incision is in the form of capital I is made on the bark. इसे आई शेप में करते हैं, and the same जब वो बड लेते हैं अंदर इस तरफ डाल के, that would be tied thoroughly. Okay, now a rectangular patch bud, एक पैच बड लेके that would be inserted here into this. थोड़ा सा इस तरह, as you can see here. पैच बड लेना पड़ेगा यहाँ पे, फ्रूट ट्रीज एंड फॉरेस्ट ट्रीज में ये कर सकते हैं आई बडिंग. ठीक है. नेक्स्ट आता है फोर्थ कट बडिंग. नाउ ये जनरली फोर्थ कट बडिंग जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है या फिर रेन्स ज्यादा है या फिर हार्श कंडीशन है, उस प्लेसेस में ये बहुत यूजफुल है. अगेन मेड इन फ्रूट ट्रीज, वेरियस फ्रूट ट्रीज एंड फॉरेस्ट ट्रीज. इंसिजन इज मेड एज यू कैन सी हियर. अगर ये बार्क है, okay, they will make a cut like this, and this यहाँ से फिर कट नहीं करेंगे, this particular thing that is cut, the bark part, that will be used as a flap. Okay, so incision is made on the bark of the rootstock in the shape of this, as you can see here, and pulled downward as a flap. Either इस तरह से करते हैं या इस तरह से करते हैं, but either in case that will be acting as a flap. It is used, then cover the inserted bud patch. जो bud patch इसमें डाल रहे हैं, it will be helpful to cover that. The flap is later removed to expose the bud. Later, after at least कुछ time के लिए they'll keep it like that only. Now rest जो similar bud patch budding वाला method है उसी तरह से है. Okay, this flap will कवर नो, फ्लैप इस तरह से आता है, ये नीचे जो बड है that will be protected for a certain period of time. After that they'll remove that and it will grow into a new plant. ठीक है. नेक्स्ट आता है फ्लूट बडिंग. एज यू कैन सी हियर, फ्लूट बडिंग में क्या है, जो बड स्टॉक से जो बड पैच लेते हैं that would be in the form of a ring. पूरा रिंग नहीं, थोड़ा सा छोड़ के, as you can see here.
Okay, so patch of bark is removed from the stem of a rootstock as it's completely encircled it, except for a narrow strip of bark, approximately 1/8 of the rootstock circumference. पूरा वो cut कर लेते हैं, as you can see here. Now this would be latched onto the stalk. Similarly, okay, after removing that portion, and now this will grow into a new plant. इससे क्या है, अलग से कुछ बांधना ये सब इतना जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, अगेन कुछ फ्रूट ट्रीज एंड फॉरेस्ट ट्रीज में ये हो सकता है. फ्लूट बडिंग, रिंग बडिंग और एन्युलर बडिंग, एज यू कैन सी ये पूरा एज अ रिंग. हम लोग यहाँ फ्लूट बडिंग में क्या है, थोड़ा सा छोड़ दिया था बार्क हमने, राइट, बट हियर इन दिस केस completely as a ring it would be removed, as you can see here. As you can see here, completely as a ring it is removed. It involves removing complete ring of bark from the rootstock. It is then replaced with a complete ring of bark with the same size from the bud stick. And ये generally mulberry, peach, bear में होता है. And bear में ये one of the commercial methods that is used for propagation. बेर में ये बहुत ज्यादा होता है. ओके, तो ये हो गया रिंग या एनुलर बडिंग. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोपगेशन मेथड अगेन वेजिटेटिव ही है. दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर. आप सबने तो अपने अपने इसमें किया ही होगा माइक्रो प्रोपगेशन या फिर टिश्यू कल्चर इन योर ग्रेजुएशन. हमने तो किया था. Micropropagation is the aseptic culture of cells, pieces of tissue or organs. इसमें majorly 4 stages होते हैं. एक तो the initiation stage, a piece of plant tissue is selected healthy from a healthy plant, that is called as an explant, and it is cut from the plant and it is then disinfected, removal of any surface contaminants and placed on the medium. As you can see here, एक medium में रख देते हैं and this medium has all the required nutrients, okay, which is mixed with agar agar solution so that वो एक jelly type का रहे. Now liquid होगा तो that particular small explant, small tissue that might sink into that फिर ग्रो नहीं, इसलिए इसमें अगर अगर डाल के इसके थोड़ा सा जेली टाइप का बना लेते हैं. On that, if you place this material, this cell, though जो भी small tissues, slowly they'll utilize the nutrition from this solution and then they form a mass of structure. मतलब सिर्फ सेल से सेल्स डेवलप हो रहे हैं ना, so एक mass of structure होंगे. Now for this mass of structure, they'll now go for addition of some phytohormones. जैसे कि सबसे पहले उनको एक्चुअली रूट फॉर्मेशन चाहिए, सो हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन. सो इस टाइम पे ऑक्सिन से ज्यादा डालेंगे एंड साइटोकाइनिन कम डालेंगे. इससे क्या होता है, रूट फॉर्मेशन होता है इन हाई ऑक्सिन एंड लो साइटोकाइनिन. उसके बाद देन दे विल डू लो ऑक्सिन एंड हाई साइटोकाइनिन स्लोली, सो दैट विल इनिशिएट शूट फॉर्मेशन. वंस दिस हैपेंस, सो अभी बिल्कुल प्लांट पूरा रेडी है, रूट्स भी है, शूट्स भी. नाउ दे विल स्लोली सेपरेट ईच प्लांटलेट फ्रॉम दिस मिक्सचर एंड देन एक्लेमेटाइज करते हैं पहले ग्रीन हाउस में रख के, सो दैट बिल्कुल हार्श कंडीशन ना हो. वंस दे गेट एक्लेमेटाइज्ड टू द आउटसाइड कंडीशंस इन द ग्रीन हाउस इटसेल्फ, दैट कैन बी ट्रांसप्लांटेड आउटसाइड. बाहर कहीं पे भी डाल सकते हैं. बनाना में ये बहुत यूज होता है माइक्रो प्रोपगेशन. वेराइटीज लाइक श्रीमती, ग्रॉस माइकल, ग्रैंड नेनी आर मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड अंडर टिश्यू कल्चर टेक्निक. एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक से कई सारे और फ्रूट ट्रीज भी ग्रो कर सकते हैं. वेरी रिसेंट, आई थिंक लास्ट टू लास्ट बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया वो दिया था ना कि प्लांट टिश्यू कल्चर का जो सेंटर्स होते हैं, दे हैव दैट, सो दैट quality plant materials can be provided to the farmers without waiting. पहले क्या होता था, बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करते थे एंड वहां से आया मतलब क्वारंटाइन भी करो फिर उनको बहुत दिनों तक, एंड देन दे यूज टू अलाउ दिस न्यू वेराइटीज इनटू इंडियन मार्केट. लेकिन अभी क्या है, खुद ही हम लोग ये कॉमन टिश्यू कल्चर जहाँ पे सेंटर से, फ्रॉम दैट दे कैन ऑब्टेन द हाई क्वालिटी प्लांट मटेरियल. ठीक है, ये है माइक्रो प्रोपगेशन का इनिशियल स्टेज, ये है एज यू कैन सी हियर. एंड देन मल्टीप्लिकेशन इज कैलस फॉर्मेशन, आफ्टर दैट रूट फॉर्मेशन एंड शूट फॉर्मेशन, हाई ऑक्सिन टू cytokinins and high cytokinins to auxins. Based on that, that organogenesis will happen. After that, first they'll be acclimatizing in the greenhouse, later outside, thereby making it available for the sale in the market. ठीक है,
मैंने इतना ही आज इसमें ऐड किया था, मुझे लगा इसी में बहुत टाइम जाएगा, लेकिन जल्दी ही हो गया है. So we'll start with the next topic in the next class. So meanwhile, we'll do the questions for the yesterday's topics. Yes. Now, which type of dry dehiscent fruit splits along two seams with seeds borne on only one of the, oh sorry, one of the halves of the split ovary and is characteristic of plants such as pea, bean, peanut, etc. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, मे बी वहां पे आपको एग्जाम्पल्स भी नहीं मिलेंगे, एंड यू हैव टू identify the type of fruit based on these characteristic features only. Yes, what is the answer here? Yes, others, what happened? It is legume. Okay. Yes. Moving on to our next question. Which of the following characteristics distinguishes a silic from है silicil? दोनों में फर्क क्या है? इसमें मेजरली जो बीच में एक स्ट्रक्चर रहता है उसमें हमें सारे सीड्स अटैच होके मिलेंगे. व्हेन यू रिमूव द ऊपर द व्हाट यूल से द पॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर जब निकालेंगे, सो इन बिटवीन यूल हैव दिस. Okay, but again this is of two types, siliqua and silicil, that is based on which of these following characteristic features? ये हमने डिस्कस किया था. No, siliqua and silicil दोनों length to width ratio of the dried fruit. The length would be more than 3 times the width of the dried fruit, or the length would be less than 3 times the width of the dried fruit, based on which siliqua and silicil are differentiated. Okay, it is C, length to width ratio of the dried fruit. Moving on to our next question. Which type of dehiscent capsule opens by a transverse split forming a lid that exposes the seeds as seen in plants like celosia and amaranthus? Yes, एक कट होके ऐसे ओपन हो जाता है. मुझे मेरा ड्राइंग बहुत बैड है, सो इसमें जो ऐसे कट होके द सीड्स विल बी एक्सपोज्ड. यस, दिस इज पिक्सिस कैप्सूल. ओके, ये पिक्सिस कैप्सूल में होते हैं. पोरोसिडल में जैसे पेपावर सोमनिफेरम पोर्स होते हैं उसमें, एंड उसमें से वो निकल जाते हैं. लॉन्गिट्यूडनल, जब वो कैप्सूल लॉन्गिट्यूडनली कट होके निकल जाते हैं, सेप्टिसिडल सेप्टम के यहाँ पे वो कट होके दैट विल गेट सेपरेटेड एंड द सीड्स आर एक्सपोज्ड. ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन पूछा है. विच टाइप ऑफ dehiscent capsule opens by longitudinal slits along the septa, exposing the seeds attached to its central axis, as seen in plants like linseed and cotton? Yes, it is septicidal. Septicidal capsule along the septa. यही पे है आंसर. Which type of dry indehiscent fruit has a hard pericarp that is free from the seed coat and is characteristic of sunflower family Asteraceae? Yes.
इसीलिए इसकी फैमिली को ही अखिनियल फ्रूट्स बोलते हैं, राइट? Okay, which type of dry indehiscent fruit is characterized by a fruit wall that is fused to the seed coat as seen in the cereal grains such as wheat, rice and wheat? ये देखने में excuse me, अखीन की तरह ही है, but it is fused. The fruit wall is fused to the seed coat. Okay, that's the reason these have been kept completely separately. Yes. एंड ये ग्रेन बोलते हैं उसको, एंड सीरियल ग्रेन्स में ये कॉमन है. सीरियल ग्रेन्स में टाइप ऑफ फ्रूट, इट्स कैरियोप्सिस, उसको कैरियोप्सिस बोलते हैं. प्लीज आप रिवाइज कीजिए, बेसिक क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट. अरे ये आंसर यहाँ मिल गया, सॉरी. Which type of fruit splits into one-seeded segments or merycarps on ripening, but the merycarps remain unruptured as seen in plants like dill and carrot? So we have seen merycarps जो बिल्कुल एक एक सेपरेट ऐसे टूट जाते हैं, and when they reach the ground and slowly this all will get disintegrated exposing the seed, thereby it germinates. It is schizocarpic fruit. Schizocarpic, it falls between the indehiscent and dehiscent fruits. Okay. Yes, which type of fruit is characterized by a constricted or divided fruit that breaks into one-seeded merycarps at maturity, as seen in plants like mimosa, acacia and tamarind? ये भी हमने डिस्कस किया था फोटोज के साथ. यस, शाइजोकार्प ही है ये, नो डाउट, बट द काइंड ऑफ शाइजोकार्प. कैप्सूल तो डेहिसेंट वाला है ना. कैप्सूल तो इसमें आता ही नहीं है. टैमरिंड, जब भी वो याद है, टाइप ऑफ फ्रूट इन टैमरिंड इज कॉल्ड एज लोमेंटम. व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस क्वेश्चंस, बिकॉज कई सारे ये क्वेश्चंस, एक तो मैंने थोड़ा सा ट्वीक भी किया है आपके लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए, अदरवाइज ये हाई लेवल क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ओके, मैंने बहुत उनको इजी करके दिया है यहाँ पे, ठीक है. Yes, which type of fruit develops from multiple ovaries of a single flower, resulting in a cluster of fruits? We also called it as etario of berries, etario of so and so fruits. Okay, it is multiple ovaries from a single flower. एक ही flower है लेकिन उसके multiple ovaries है, वही एक fruit की तरह develop हो जाता है, each ovary एक, okay, cluster की तरह. Yes, what is that fruit called? ये भी फोटोज के साथ मैंने दिखाया है. Yes, etaria of berries, strawberry photo. This is aggregate fruit. Okay. Yes, moving on to our next question. Which type of fruit develops from the fusion of multiple flowers of an entire inflorescence? पूरा एक entire inflorescence से fruit की तरह बन रहा है, resulting in a single fruit as seen in fig, jackfruit, pineapple, mulberry, etc. Now, what is this kind of fruit called? Yes, it's called as composite fruit. Okay. Yes. Which of the following vegetable categories consist of plants whose flowers are consumed as food? Which of the following vegetable categories consist of plants whose flowers are consumed as food? Economic part, based on that we have seen the classification of fruits, vegetables, sorry. Okay. यस, किसी का रूट खाते हैं हम लोग, आई मीन एडिबल होता है, किसी का स्टेम एडिबल होता है, किसी का लीफ एडिबल होता है, किसी का फ्लावर्स एडिबल होता है, किसी का लीफ शीथ एडिबल होता है, राइट. सो हियर इट इज आर्टिचोक.
कॉलीफ्लावर भी इसी में आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बल्ब वेजिटेबल? बल्ब वेजिटेबल किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन आया था AFO एग्जाम में, ओके, एंड एक RRB एग्जाम में भी आया था ये. सो हियर इट इज अनियन. ओके, कई सारे बच्चों ने पोटैटो लिख के आए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर प्लांटिंग क्रॉप्स लाइक पोटैटो एंड याम? Which of the following methods is used for planting crops like potato and yam? अभी हमने देखा था स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स किस तरह से प्रोपगेशन होता है. It is planting of bits of tuberous in corms. Which of the following crops is highly tolerant to acidic soil with pH range of 5 to 5.5? इतने हाई एसिडिक कंडीशंस में भी इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं. Yes, which is that kind of crop? एक तो फ्रूट्स में ब्लूबेरी को हाई, इतने हाई एसिडिक कंडीशंस में इवन लेस देन 5 में भी ग्रो कर सकते हैं. ओके, एंड वेजिटेबल्स में देखा जाए तो इट इज पोटैटो. ठीक है. नाउ in the high density planting system, what is the characteristic feature of meadow orchards type of planting density? मेडो ऑर्चर्ड्स मतलब मेडोस में मतलब 2-3 फुल नंबर ऑफ रोज, बीच में एक एली टाइप, देन दे विल ग्रो. मेडो ऑर्चर्ड्स, ये भी इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग ओनली. It is extremely high density with 70,000 trees per hectare. Okay, very good. Which of the following is a key characteristic feature of high density planting trees? हमने कुछ characteristic features किए थे, उनकी ये सारे करेंगे तो we'll be able to go for high density planting, right? Yes. It is tree height must be equal to its base diameter for optimal growth. एक्चुअली ये सेंट्रल लीडर होना चाहिए ना. सेंट्रल लीडर इज मेंटेन्ड विद नियरली हॉरिजॉन्टल फ्रूटिंग ब्रांचेस टू ऑप्टिमाइज. नियरली हॉरिजॉन्टल, नो हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं वो, इसी तरह से ग्रो करना पड़ता है सो दैट उनका एक्सपोजर भी हो एंड मोर नंबर ऑफ प्लांट्स भी अकोमोडेटेड. नहीं, ये नहीं है. ट्री हाइट मस्ट बी इक्वल टू, यस, हाइट थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा सो दैट ऑप्टिमल ग्रोथ. इट इज सी ओनली. देखिए मैं खुद कंफ्यूज हो गई, ऑप्शंस में कई बार हो जाता है. What best controls tree size in high density planting while boosting early fruit yield? ये हमने कई सारे मेथड्स दिए थे. कई जगह पे रूट स्टॉक उस तरह से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, एंड कई जगह पे हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट देते, कई जगह पे हम लोग फाइटो हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं सो दैट वो जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए उस तरह का मिले, एंड देन एट द सेम टाइम देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रोडक्शन, राइट? यस, यहाँ पे कौन से ऑप्शन से हमें रैपिड ग्रोथ नहीं चाहिए? जो कई सारे बच्चों ने बी लिखा है, ये बिल्कुल नहीं है. स्पिंडल बुश प्रूनिंग ही चाहिए. ओके, बट ये दे सेइंग स्किप, ये भी नहीं. ये बिल्कुल ऑप्शन ही इररिलेवेंट है. इट इज पैक्लोबुटराजोल प्लस 45 डिग्री ब्रांच टाइम. इट इज फाइटोहार्मोन प्लस
45 डिग्री इस तरह से ब्रांच ट्रेन करेंगे सो दैट उनका एक्सपोजर भी सही रहे सनलाइट का, एट द सेम टाइम more number of plants can be accommodated so that high density planting के लिए बिल्कुल सही रहेगा. It is that one. Okay. Again answer. मैं देखना भूल गई लास्ट में. Which of the following is a significant limitation of sexual method of plant propagation using seeds? Okay. When we use seeds for the sexual, sexual method of plant propagation, उसका सबसे बड़ा limitation क्या है? सबसे बड़ा limitation है they are not true to type to the mother plant. These are heterozygous in nature because पोलन प्लस ओव्यूल दोनों के फीचर्स आ रहे हैं. दैट इज ये फादर प्लांट समझ सकते हो, मदर प्लांट समझ सकते हो. ओके. डिफिकल्टी एक्चुअली दिस इज द ओनली मेथड थ्रू विच यू कैन डेवलप हाइब्रिड वेराइटीज. रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं. लिमिटेड वायबिलिटी ऑफ सीड्स फॉर लॉन्ग स्टेम, ये भी ये तो है बट स्टिल दिस इज द मेन मोस्ट सिग्निफिकेंट लिमिटेशन. दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लिमिटेशन. Which of the following is a characteristic advantage of asexual method of plant propagation? Which of the following is a characteristic advantage of asexual method of plant propagation? Yes, ये easy है. This is homogeneous in nature, true to type to the mother plant, एक characteristic advantage है. ठीक है. Yes. Oh, ये भी आंसर दिख रहा है. I don't know why. Which of the following plants can only be propagated through seeds as asexual means of propagation are not practicable in such cases? कई बार rudimentary seeds होते हैं या फिर viable seeds नहीं होते हैं. Very tough to extract the seeds. Okay, बहुत सारे reasons होते हैं. In that case, only propagation can be through seeds or the seedlings. और इसमें आते हैं coconut and papaya. And ये question, believe it or not, एटलीस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वेयर एग्रीकल्चर वाज अ सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था हर एग्जाम में कभी ना कभी. ओके. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड. और थोड़ा टाइम ले सकती थी, और 15 मिनट तो थे हमारे पास जो हमारा ग्रेस रहता है, बट इट्स ओके. नाउ द फोरम इज ओपन फॉर योर क्वेरीज क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी. अदरवाइज आपका 7:30 का तो क्लास है ही. आई लीव यू अर्ली. आई थिंक 15 मिनट में ट्रेनिंग तो कर ही लेते हैं हम लोग. ट्रेनिंग पार्ट, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, वन ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस जो इम्पोर्टेंट है. Yes, if there are no questions, I'll wind up the session. If there are any, you can ask. Okay, since there are no queries, I'm winding up the session then. And see you all on Monday. Just ये महीने के लिए we'll have we'll not have classes on Saturday. Next month से we'll start with Saturday class on Saturday as well, so that हमारा जो syllabus completion वो जल्दी से हो जाए. And बस इतना ही. See you all on Monday then. Okay. Thank you very much. Please take very good care of yourself. Have a great weekend. Enjoy your weekend also, but at the same time, revise the content, whatever, or the topics that we have done during this week. Okay. Yes. Thank you very much once again. Take care. Bye bye. Good night.